ये बोल बसंती का आकाशवाणी केंद्र है और कल मेरे शहर में बीच रात को मूसलाधार घमासान वर्षा हुई, आंधी आई, तूफान आया और आज मौसम काफी आशिकाना, मस्ताना, रोमांटिक हो रहा है। पर इस रोमांटिक मौसम में गॉड का एक अलग ही मूड है डांस करने का। तो वो अपनी डिस्को लाइट्स ऑन करके डांस कर रहे हैं। सो इसलिए अगर मेरे इस साइड के एंगल पे आपको लाइटिंग ऊपर नीचे डार्क लाइट होते हुए दिखे, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि गॉड का है मूड। डिस्को दीवाने। ओके सॉरी, इससे पहले कि आप लोग ये एपिसोड यहीं पर ही बंद करके निकल लें, मैं एपिसोड आगे लेकर चलती हूँ। हाउ सिली ऑफ मी। Sorry. Hi everyone. Welcome to BolBasanti podcast series, season 1, Journey to Self-Love. And this is episode 4. Not 2. Which is self-talk for self-awareness. अब ये सेल्फ टॉक, अरे रिचा कितना तुम काम करवाओगी, कम ऑन यार। कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनता है, इट टेक्स सम एफर्ट, राइट? और अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना हो, ऑल द मोर। और ये रिलेशनशिप तो आपको अपने साथ बनाना है ना, दोस्ती का, सो दैट यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव। सो यार थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा, है ना? सो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे जो ट्रेट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें हमें वर्क करना है और कौन से ऐसे हैं जिन्हें हम एनहांस करना चाहते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम आवर ट्रेट्स, there are other aspects of our personality which equally play a crucial integral part and which we need to go through to a journey of self-love. That part is our fears and insecurities. हम सब ह्यूमन हैं। There are things जो हमें स्केयर करती हैं, जिनसे हम इनसिक्योर हैं, और हम नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए, right? So now the next step towards this journey or the station is identifying those fears and insecurities. You know, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे पॉइंट आउट करते थे कि आई एम ऑलवेज ऑकवर्ड विद कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई भी मेरे फ्रेंड, कॉलीग, एनीबडी, क्लासमेट मुझे अगर ये कॉम्प्लीमेंट करे, ओ यार तू अच्छी लग रही है, यू लुकिंग नाइस, गुड, oh you're beautiful, you're pretty, sexy, hot, any of these adjectives, instead of saying thank you, that's really sweet of you, so do you, I'd be like yeah right, whatever, चलो अभी काम करो, चल झूठा, चल झूठी। you know, कुछ टाइम तक तो they were all fine कि चल ठीक है मस्ती कर रही, but after a point they started getting irritated कि यार we genuinely mean it, तो ऐसे क्यों उसको dismiss कर देती है? What's your problem? Why can't you just, you know, accept it, say thank you and move on? इतनी बड़ी बात क्या हो गई? And that made me realize कि consciously or subconsciously or unconsciously, I genuinely used to make efforts to make myself look very average, very okay. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या कटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण हूँ, बट in my head I knew that I'm a decently presentable or decent looking girl, right? But the fact that if somebody just acknowledged it and appreciated it or complimented for the same, I was awkward. And when I started realizing ki this was actually, I think, right after my school, that from being an intelligent girl, the smart girl, the all-rounder of our school, I was one of the toppers. Not believable, but yes, I was one of the toppers. Achanak se, all anybody could see was
my face, my appearance. And there's nothing wrong about it, to be very honest. Looking, back, I was like, क्या प्रॉब्लम थी? पर जब मैं अपनी इस जर्नी पे निकली, जहाँ पर मुझे अपने आप से इश्क करना था, सेल्फ लव करना था, आई सेड आई नीड टू नो व्हाई। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे ये डर इसलिए है बिकॉज शायद मुझे लगता है, स्पेशली दिस कॉम्प्लीमेंट्स यूज्ड टू कम फ्रॉम मेल section of the society. I always felt that they had some ulterior motive behind it. Even if they didn't, ये मेरा डर था, you know. And I guess many of the girls here, and even the men, maybe, I'm sure there are a decent number of men also who would probably find this relatable, that sometimes it's not about somebody appreciating us, sometimes it's a fear which let us not compliment our own selves and appreciate our own selves. बिकॉज मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, इसलिए कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे सच नहीं लगता था, मुझे हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई जरूर इसका होगा, और दिस मैन इज ट्राइंग टू गेट इनटू माय पैंट्स। सीरियसली, दिस इज व्हाट आई थॉट, इफ एनीबडी वुड से यू लुकिंग नाइस, मेरे दिमाग में तो मतलब उस इंसान की इमेज ही कुछ बन गई होगी। अगर दोस्त है तो फिर मैं बोलूंगी अच्छा इसको लगता है अट्रैक्शन हो रहा है मेरे से, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एंड दिस हैज बीन गोइंग फॉर रियली लॉन्ग। लाइक इमेजिन, अगर स्कूल कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ तो ये तो मेरा ब्रेकअप तो अभी मतलब 10 साल पहले हुआ था। उससे पहले रिलेशनशिप में और उससे पहले मेरे दोस्तों ने मुझे ये सब पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था। तो व्हेन आई थॉट कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज माई फियर इज गिविंग स्पेस टू माई इनसिक्योरिटी। हम कितना भी इन दोनों को अलग करने की कोशिश करें, बट फियर और इनसिक्योरिटी ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। एज मच एज वी ट्राई टू सेपरेट दीज टू, आई फील दैट जो फियर होता है ना, वो हमेशा आपकी इनसिक्योरिटी का रास्ता बनाता है। एंड इनसिक्योरिटीज विल ऑलवेज हैव अ फियर। आप ऐसे इनसिक्योर नहीं फील कर सकते। जैसे द फियर ऑफ लूजिंग माई सेल्फ गेव way to an insecurity of mine where I would do things just to make somebody happy, to please them, and keep myself at bay, only because I felt, what if the person doesn't like me? What if I'm not accepted? What if I'm too much? What if I'm less? So these were, few of my fears and insecurities, and I'm sure there were many. अभी मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है। बट इस बार मैंने ना एक लिस्ट नहीं बनाई। ऐसे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डीप है, ये लिस्ट में नहीं बन सकती। तब मैंने अपने आप को एक खत लिखा। आई रोट अ लेटर टू माई सेल्फ, एंड देन वन मोर, एंड देन वन मोर, एंड देन वन मोर, एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं कुछ सोचूंगी नहीं। इनफैक्ट जो फील कर रही हूँ या जो दिमाग में आ रहा है वो लिख रही हूँ, बस लिखते जा रही हूँ। Basically, I was just venting out myself, not ranting, but venting out myself. खाली कर रही थी अपने आप को, because I genuinely feel कि हम सब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। Nobody wants to be in a negative, trashy feeling वाले जोन में, right? But है कहीं ना कहीं, because we do get hurt, we do get cringy, we do get grumpy, we have our bad days and good days, right? But denying those feelings will not take us anywhere. So I thought पहले जो ये negativity है ना उसको खाली करो, so that you make space for positivity to come and settle down, so that there's less and less space for negativity. So I wrote a letter to myself. What are the things that scare me? What are the things that make me feel good, make me feel confident?
what am I feeling right now, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो मैं रिग्रेट करती हूँ, एनी डिसीजन दैट आई रिग्रेट, मैं किसी चीज को लेके क्यों रिलक्टेंट हूँ, you know, trying to find the answers. And if there are no answers to some of your um, you know, things that you come across, it's okay, completely fine. Sometimes either the answer will come to you or the solution will come to you. So यहाँ पर सिर्फ मैं ये कर रही थी कि डायरी में जो मन हो रहा था, जो मुझे लिखना था, जो शायद मैं किसी और से कहना चाहती होती थी, मेरी डायरी वो मेरी दोस्त बन गई थी। उस डायरी में लिखना, डॉक्यूमेंट करना। And later I started making videos. Like, I'll put my phone on a selfie mode and I will record a video and just talk. आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ, फिर ऐसा हुआ, वो हुआ। I'll talk about my achievements, I'll talk about my downfalls. उस वक्त जो भी मुझे फील हो रहा होगा, जैसा मैं फील कर रही होंगी, मुझे रोने का मन कर रहा होगा, हंसते हंसते रो रही होंगी, रोते रोते हंस रही होंगी, खुद को ही मोटिवेट कर रही होंगी, खुद को ही मैं क्रिटिसाइज, मतलब जो भी मेरा दिल कर रहा होगा, whatsoever, I will just say. There were times that actually I found solutions. I found answers to my questions. कि क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, या ऐसा करूंगी तो बेटर होगा. Which is your inner voice. As much as we have the problem, solution भी हमारे पास होता है. And that was the time I realized कि that is so true. हम solution के लिए लोगों के पास जाते हैं, solution हमारे पास होता है, क्योंकि कोई कितना भी हमें कुछ भी बोल दे, जब तक यहाँ से वो आवाज नहीं आएगी ना, आप यहाँ से यहाँ नहीं उठोगे, हिलोगे भी नहीं. So when I was venting all of this, I realized what are my thoughts about myself, about people around me, about my life, which gave me a very, clear, colorful picture. And I was like, okay, so this is how it looks. And it's not about how it looks to others. This is how it looks to me. And does that make into a beautiful painting? Maybe. Is there a possibility to make this painting better? For sure, there's a scope of improvement, like we say every time. पर क्या मैं ये सब अभी इस पे वर्क करना चाहती हूँ? नहीं. Because I already had too much on my plate. Like, I was already working on my traits, on my habits, enhancing them, making them better, working on them, in reducing the intensity of those things. I was like, okay, you know what? It's fine. The fact is, I know my fears, I know my insecurities, I know the reasons behind them. And just knowing it, in a way, if I am acknowledging my fears and insecurities, it is very courageous and it's a victory in itself. And more than anything, it was very relieving, very enlightening. I'd rather say very spiritual in some ways. It made me more at peace with myself. Yeah. So this particular station of this journey of self-love was very spiritual eventually for me. Okay, थोड़ा सा heavy हो गया आज का episode, so we'll meet up next week. So we will meet on 13th of March on our next episode. So stay tuned, and I promise it'll be less heavy than this time. Bye bye. Today I look like Cadbury's, no? Like washed out Cadbury. Bye guys.